Good morning, all of you, and welcome to Gyanidhi online classes. And today we will discuss our new topic, that is chapter number 18 of your English grammar book, that is your transformation of sentences. Okay, we will read about transformation of sentences. So, open your book, page number 121. Okay, 121, chapter number 18. Okay, transformation of sentences. Okay. So here are some questions given in the box. Okay, here are some questions given in the box that we have to identify whether the sentences are assertive, interrogative, or exclamatory. Okay, so before going to this, we have learned about the different types of sentences and how the sentences are converted from or transformed from one kind to another kind in our previous classes. Okay, so have a glance to all the classes of sentences. Okay, all the classes periods of sentences that what we have discussed in that class. Okay, so here are some questions that whether the statements are assertive, interrogative, or exclamatory sentences. Okay, so assertive sentences are also called as declarative sentence. Okay, assertive sentences are also termed as your declarative sentences, as they state something. Okay, they simply state something. Interrogative sentences are those sentences which ask questions. Okay, which ask questions. And exclamatory sentences are those sentences which expresses a strong feeling. Okay, that may be your sadness, okay, hungry, whatever the strong feelings. Okay, that expresses strong feeling, and we use the exclamation mark for the exclamatory sentence, and for interrogative sentence we use question mark, and for declarative sentence or assertive sentence we use the full stop. Get it? So each and every sentences that begins with the capital letter and ends with a full stop, question mark, or exclamation mark. Okay, we see a lot of punctuation marks in a sentence. So let's go to the topic. Okay, so first question is Sarthak is the fastest swimmer. Okay, here the question is that Sarthak is the fastest swimmer. Okay, so which kind of sentence it is? It is your declarative sentence. Okay, declarative or assertive. Okay, assertive sentence. Okay, the second question is did she sleep peacefully? Second one, did she sleep peacefully? Okay, did she sleep? Sorry, sleep. Did she sleep peacefully? Which kind of sentence it is? It is your interrogative. It is your interrogative sentence. Okay. So step 1 is your interrogative sentence. Then come to third one. What an intelligent answer he gave. What an intelligent answer he gave. So third number will be your exclamatory sentence. Okay. What an intelligent. Okay. What an intelligent answer he gave. Okay. So this is your exclamatory sentence. Okay. What on Raj and Raina practice for the play? Okay. Raj and Raina practice. Okay. Practice for the play. So it is your assertive sentence. It is your assertive sentence. And last one is, would you like to have tea or coffee? Would you like to have tea or coffee? Last one is your interrogative sentence. Okay. So here you can see the sentence ends with a full stop. So it reminds us about the
assertive or declarative sentence. Okay, the second one ends with a question mark, so it will be your interrogative sentence. Third one, exclamation mark, so it is your exclamatory sentence. Okay, fourth one, full stop, it is a declarative sentence, declare something. Okay, and fifth one is your question mark. Okay, at the end of the sentence in fifth number question, okay, there is a mark, there is a question mark, so it is your interrogative sentence. Okay, get it? So next we will come about the transformation of sentence. Okay, we will know about the transformation of sentences, that how a sentence, positive sentence, is converted into negative form. Okay, how positive sentences are converted or transformed into interrogative form. Okay, here on we will discuss further. Okay, so we can change a positive sentence into negative sentence. Okay, we can change a positive sentence into negative sentence by adding not after the verbs like is, am, are, were. Okay, so we can change or convert. Okay, positive, we can change a positive sentence or statement, okay, into negative sentence by adding not after the verb is, am, are. Okay, after the verb is, am, are. So we can change a positive sentence or statement into negative sentence by adding not after the verb is, am, are. तो हम क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना, एक पॉजिटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में कब फॉर्म कर सकते हैं, बाय नॉट लगा के, ठीक है ना। एक पॉजिटिव सेंटेंस को नॉट लगा के, इसके बाद वर्ब के बाद नॉट लगा के उसको नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, लुक हियर एग्जांपल लाइक पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, ही इज राइटिंग ए लेटर. he is writing a letter. इसको हम नेगेटिव फॉर्म में करेंगे. We have to convert it into a negative form. So what was the criteria for changing or converting positive sentence into negative sentence? We have to add the not after the verb to make it a negative sentence. Okay. So the sentence will be he is not writing. He is not writing a letter. ओके, he is not writing a letter. ठीक है ना. यहाँ पे देखो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय एडिंग नॉट आफ्टर द वर्ब. तो मैंने क्या है, वर्ब के बाद क्या है, नॉट को ऐड करके उसको नेगेटिव बना दिया. ठीक है ना. एक पॉजिटिव सेंटेंस रहता है और एक नेगेटिव सेंटेंस रहता है. ठीक है ना. पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्या नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नॉट यूज करके आफ्टर द वर्ब. ओके, देन सी द सेकंड वन. ओके, the children are playing. Okay, the children are playing. नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, the children are not playing. Okay, the children are not playing. I write a letter. They are doing homework. Okay, they are doing homework. So how can we convert this sentence into negative? By adding not after the verb. Okay, after the verb. They are not doing
over. Get it? So in this way we can change a positive sentence into a negative one. Okay. Okay. So there is also one example like I am. Okay, I am an English teacher. I am an English teacher. Okay. So in order to convert it into a negative form, we can write I am not an English teacher. Okay. You are student. Okay. You are students. You are students. Sentence will be negative. Sentence will be you are not students. ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या है नेगेटिव सेंटेंस क्या है हम बना सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कैसे एक सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा। ठीक है ना? फर्स्ट वन ओके, देन सेकंड वन वी कैन चेंज or convert okay a positive statement or sentence वही है समान है। ठीक है, we can change a positive statement to a negative statement by adding not between the helping verb and main verb. Okay, by helping we can change a positive statement to a negative statement by adding not between the helping verb and main verb. तो helping verb और main verb के बीच में not लगा के हम एक positive statement को negative statement में बदल सकते हैं। To see the example, I am teaching English. Okay, I am teaching English. So here am is your helping verb and teaching is your main verb. Okay, so between these two verbs we will add not and make it as a negative verb. Okay, so I am not teaching English. Okay, I am not teaching English. In this way, you have to make a positive statement into a negative. So it is your positive statement, and this one is your negative statement or sentence. Get it? So see the next example. Okay, see the next example. Okay, the boys are playing. The boys are playing carom. Okay, the boys are playing carom. See the sentence. So here R is your helping verb. ठीक है ना? helping verb क्या है? वो वर्ब जो कि क्या है किसी सेंटेंस में लग करके उसको हेल्प करते हैं। helping verb ठीक है ना? R is your helping verb and A is your main verb. Okay. So the negative sentence is your positive statement or positive sentence. Okay. So the negative statement will be the boys are not. Okay, the boys are not playing carom. Okay, the boys are not playing carom. Okay, so in this way we can make a positive statement into negative statement. So look at the sentence. Okay, look here. The sentences in simple present or simple past tense are changed to negative sentence by adding do, does, did along with not in front of the main verb. Okay, in front of the main verb. Okay. So sentence in simple present or simple past tense are changed to negative sentence. जो सा sentence ठीक ना simple past tense या simple present tense को ठीक ना एक positive simple present tense या simple past tense को
नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड डू डज डिड, ठीक है ना, डू डज डिड, इनमें से कोई एक को क्या है ऐड करके किसके साथ, नॉट के साथ, किसके पहले, इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले क्या है इसको ऐड करके हम क्या है बनाएंगे। तो सी दैट एग्जांपल, आई रीड मैगजीन्स, ओके, आई रीड magazines, okay, but it is a positive statement, so how can we make it a negative one, like I do not read magazines, I do not read magazines, ठीक है ना, ये क्या है सिंपल प्रेजेंट में है, इसको नेगेटिव फॉर्म में करेंगे तो क्या है डू के साथ क्या है नॉट लगेगी, ठीक है ना, I do not read magazine, ठीक है ना। Then come to next example, okay, Naina writes short stories, Naina writes short stories, so sentence will be Naina does not write short stories, Naina does not write short stories, okay, तो नॉट लगाने पर ही क्या है हमको क्या एक नेगेटिव सेंस मिल जाता है, ठीक है ना, नॉट क्या है एक नेगेटिव सेंस को क्या है रिफर करता है, ठीक है ना। नैना राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, नैना डज नॉट राइट शॉर्ट स्टोरीज, ओके। सी द थर्ड एग्जांपल, जेसिका डाइड हर जीन्स पिंक, ओके, जेसिका did not dye her jeans pink, ठीक है, ये तुम लोग का क्या सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस, जेसिका डाइड हर जीन्स पिंक, जेसिका डिड नॉट डाई हर जीन्स पिंक, ओके, in this way we can make a positive statement into negative statement, ठीक है ना। ये जो क्या सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट में है उसको क्या है डू और डज लगा कर क्या है हम लोग उसको नेगेटिव में बना दिए, ठीक है ना। और पास्ट टेंस में क्या है, ठीक है, डू का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, डू का पास्ट टेंस डिड हो जाएगा, तो जेसिका डिड नॉट डाई हर जींस पिंक, ठीक है ना, डू का पास्ट टेंस डिड हो गया, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस क्या है पहले से क्या पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, उसको नेगेटिव में फॉर्म करेंगे क्या है जो पास्ट टेंस है डू का डिड, ठीक है ना, वो यूज करके हम लोग उसको नेगेटिव फॉर्म में क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। देन वी विल गो टू हाउ टू चेंज अ पॉजिटिव सेंटेंस टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। See the sentence, we can convert statements with the verb is, am, are, was, were into interrogatives by placing the verb before the subject. We can convert a positive statement into interrogative form, okay, by placing the verb, okay, placing the verb before the subject, by placing the verb before the subject. So look at the example, okay, we are discussing this point, the third point, okay. This scrapbook is yours, this scrapbook is yours is a positive statement, so how can convert into interrogative form, by placing the subject, placing the verb before the subject, okay, by placing the verb before the subject. So is this, okay, so this belongs to the book, okay, so is this scrapbook used, is this scrapbook used? See the second example, the children are flying kites, the children are flying kites, so we have to bring the verb before the subject, okay. Are the children flying, are the children flying kites, ठीक है ना। तो हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यूज वर्ब से इज, एम, वाज, वेयर, ठीक है ना, ये सभी को क्या है इनमें से एक, सभी को तो नहीं, इनमें से कोई एक को अगर कोई सेंटेंस में है, ठीक है ना, जैसे कि पहले सेंटेंस में दिस स्क्रैपबुक इज योर, इज है वहां पे,
तो वैसे ही क्या कहीं पे अगर इज है तो उस वर्ब, ठीक है ना, ये जो वर्ब है उनको क्या है सब्जेक्ट के पहले हम लगा के एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने क्या है फॉर्म किया, दिस स्क्रैपबुक इज योर्स, इज दिस स्क्रैपबुक योर्स। ओके, सो आर द चिल्ड्रन प्लेइंग कार्ड्स, ये क्या हो सकता है तुम लोग का, रंजन वाज ऑन ए लीव, रंजन वाज ऑन ए लीव, उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या हो सकता है जल्दी से बताओ, ठीक है ना, ये वाला होगा तुमका पहले आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और एज वेल तुमको क्या है लिखना है, जैसे वाज रंजन ऑन ए लीव, वाज रंजन ऑन ए लीव, ठीक है, समझे। So in this way we can make the positive statement into interrogative sentence. Okay, then come to the next one. Okay, statements with a helping verb and a main verb are changed into interrogatives by placing the subject between the helping verb and main verb. ठीक है ना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को, ठीक है ना, अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना, हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव में फॉर्म करना चाहते हैं जिसमें कि जो सेंटेंस में क्या है हेल्पिंग वर्ब भी है और क्या है मेन वर्ब भी है। ओके, सो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस, we can convert this sentence by placing the subject between the helping verb and the main verb. See the sentence here, Aarti has slept. Okay, Aarti has slept, so we can use okay the helping verb between the main verb and the subject. Okay, between the sorry, we can use the subject between the helping verb and the main verb. Here has is the helping verb, okay, and left is the main verb. So we can use this subject, okay, we can use this subject in between these two to make a interrogative word. Okay, see, has Aarti slept, has Aarti slept. Look at the second one. Okay, Mahesh is going for a long drive. Mahesh is going for a long drive. Okay, so it is your helping verb and going is your main verb and Mahesh is your subject. So we have to use this subject in between the helping verb and the main verb and make a negative interrogative one. See, is Mahesh going for a long drive? Okay, is Mahesh going for a long drive? Okay, so this is your homework. You have to do. They are enjoying their picnic. They are enjoying their picnic. They is your subject. Okay, are helping verb. Okay, enjoying is your main verb. So they represent. Okay, they represent someone who is there in the picnic. Okay, so they is your subject one. Okay, so here you have to imply the statement. Okay, imply the rule and do that sentence. Okay, next come to our next rule. Okay, the statement in simple present or simple past tenses are changed to interrogative by adding do, does, did before the subject and the main verb in its base form follows the subject. Okay, see the statement that in a simple present tense or simple past tense, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है ना, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हम क्या है नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है ना, बाय डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट वी कैन कन्वर्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म. सो सी द एग्जांपल, आई ओन अ बिग बंगलो, आई ओन अ बिग बंगलो इज इन simple present. Okay, so how can I convert into negative one? Do, okay, by adding, okay, by adding, okay, see the rule here, by adding do, does, did before the subject. Okay, so I is the subject here, I क्या यहाँ पे subject है, subject के पहले हम क्या यूज कर सकते हैं do, does, did, इनमें से कुछ सा क्या यूज करके हम क्या है उसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो do I own a big बंगलो, इस लोग का क्या है क्वेश्चन बन गया. राज कॉल्ड द टीचर, डिड राज
कॉल द टीचर, ठीक है ना, और वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, पास्ट है, सिंपल पास्ट है, उसको क्या है नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे तो क्या प्रेजेंट फॉर्म में है वो हो जाएगा। डिड राज कॉल द टीचर, ओके। मिसेस सेंट टीचर स्कूल चिल्ड्रन, डज मिसेस सेंट टीचर और टीच, ओके, डज मिस्टर सेंट टीच स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल children, okay, does Mrs. Sand teach school children? So in this way we can make a positive statement into negative one, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव को क्या नेगेटिव में बदल सकते हैं। लास्ट एक क्या है, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या है इंटरोगेटिव में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। We transform simple sentences into exclamatory sentence by placing what or how at the beginning of the sentence, rearranging the words and placing an exclamatory mark at the end of the sentence. तो हम एक स्टेटमेंट को, पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय एडिंग who और what at the beginning of the sentence. सेंटेंस के पहले क्या who और what लगाएंगे, ठीक है ना, और कुछ वर्ड्स को क्या है रीअरेंज करके हम क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, और लास्ट में हमको क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ता है। तो ये सेंटेंस देखो, शी हैज ए लवली वॉइस, ठीक है ना, शी हैज ए लवली वॉइस, इसको हम कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाट, ठीक है ना, व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसको क्या हम लास्ट में क्या है पुट अप करेंगे, ठीक है, व्हाट ए लवली वॉइस शी हैज, तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, ठीक है ना। द मैन इज utterly foolish, ओके, सो हाउ utterly foolish the man is, the man is how utterly foolish the man is। इस तरह से हम क्या है स्टेटमेंट को एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास, होप यू हैव अंडरस्टूड इट properly. If you find any sort of problem, then you can ask me when the school reopens. I am there for you every time, okay. So thank you for watching the videos. Stay home and stay safe. Thank you.